यस। तो देयर वाज अ आ गए पावर सर। फेलियर एक्चुअली। तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो मैंने अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है इसको। ओके। हम्म। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म। फिर थोड़ा देखा मैंने हॉटस्पॉट में ना स्पीड स्लो हो जाती है। सर स्क्रीन नहीं विजुअल है। स्क्रीन नहीं भी, एक मिनट अभी करता हूँ। वो स्क्रीन हट जाती है ना उसमें जब आते हैं ना। ओ। अब विजिबल होनी यस चाहिए। नाउ। यस नाउ ओके। तो मोड ऑफ सेल हम यहाँ पर थे। जी। रिकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है मेरे ख्याल, ठीक है, ओके। सो 27 मोड ऑफ सेल। तो टू मोड्स, वन पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक अनदर प्राइवेट। प्राइवेट। ठीक है। The bankruptcy trustee may sell the assets by private sale in the manner specified in part B if, क्या बोलता है, if the asset is perishable in nature। तो पेरिशेबल इन नेचर में क्या हो सकता है? इट कुड बी फ्रूट्स, इट कुड बी वेजिटेबल्स, इट कुड बी मेडिसिन, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। इट कुड बी केमिकल्स विच हैज शॉर्ट एक्सपायरी, है ना? यस। Asset is perishable. Second is value of the asset is likely to deteriorate significantly if the sale is delayed. Some assets, so they are subject to say evaporation. कुछ गैसेस हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं which the value में deteriorate significantly। या डैम्पनेस की वजह से हो सकता है, कुड बी इवेपोरेशन, एनीथिंग, है ना? The selling price of the asset is higher than the reserve price of a failed auction. You tried an auction, but then you could not succeed, and now you are want to sell it. So you can sell in all these situations by way of private sale. ठीक है। The following persons shall not purchase or acquire any asset in the property of the bankrupt, directly or indirectly, without permission of the adjudicating authority. So this question has come कि the bankruptcy trustee himself wants to purchase either directly or indirectly. What is meant by indirectly? Indirectly means he is not purchasing directly, but he is putting somebody else at the front, है ना? And from whom he will यस। purchase. So in that situation, whether it is direct or it is indirect, he has to take the permission of the adjudicating authority, the bankruptcy trustee or any partner or director of the insolvency professional entity of which the bankruptcy trustee is a partner or director. So if we read this regulation, we come to the conclusion that there is no bar as such. So if you take the permission of the adjudicating authority, you can purchase. Any professional appointed by the bankruptcy trustee for the bankruptcy process, any creditor or associate of the bankrupt, and any company where the bankrupt or creditor is a promoter or director. डायरेक्टर। So in all these situations, you can purchase or you can acquire an interest in the property of the bankrupt directly or indirectly if you get the permission of the adjudicating authority. The bankruptcy trustee shall not proceed with the sale if he has reason to believe that there is any collusion amongst any amongst anyone. or more of the following persons. So if there is a collusion amongst the buyers, how you will come to know that there is a collusion amongst the buyers? Suppose
the realizable value is say 10 crores, but nobody is bidding above 1 crore. So Oh, you may come to the conclusion that there is a collusion amongst the buyers so that they don't want to raise the bid price. And ultimately, they will share the profit. So this is a tactic which is employed by many buyers. So if there is right. any such collusion and he has reason to believe, so then he shall not proceed with the sale. Second Right. is the bankrupt, the creditor, क्योंकि पढ़ा के साथ भी associates मेरा of the बहुत bankrupt or इशू और वो creditors, था the बीच में corporate debtor फॉर सम or रीजंस, related लेकिन हम party फिर of the उससे corporate बहुत debtor क्लियरली and बैठ shall के submit बात किए dispute to थे, the adjudicating बहुत authority. लंबा उससे हम बात किए थे, उसके बाद मेरे उसका इक्वेशन नॉर्मल हो गया, वरना मेरे उसका बीच में इक्वेशन बहुत खराब था ये कहीं से आवाज इसलिए आ रही है अजय तो जी, उसके आपके बाद नहीं, कैसा सर है? हाँ. And shall submit a report to the adjudicating authority for appropriate orders. harder. Now acquisition etc. of after acquired property by the bankrupt. So what it says, after a notice is given by the bankrupt under subsection 2 of section 150, he shall not part with any increase in his income or dispose of any property acquired without the prior permission of the adjudicating authority. ठीक है. If the bankrupt disposes of property before giving the notice under subsection 2 of section 150, he shall within 7 days from such disposal disclose to the bankruptcy trustee the relevant details of the person to whom the property has been transferred and shall also provide any other information which may be necessary to enable. So this we can see, and ये हमने देख ही लिया इसको, मोड ऑफ सेल. नाउ लेट अस गो टू दैट केस स्टडी विच वी वर डिस्कसिंग. ठीक है. अब लाइट भी आ गई, मैं दोबारा से इसको उस पर चला जाता हूँ. हो गया. Okay. So now let us go to that case study. Yes. So inventory lying in physical pharmaceutical division, it has short expiry. तो हमारे को क्या इसके लिए क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग शॉर्ट एक्सपायरी? प्राइवेट सेल। हाँ. तो शॉर्ट एक्सपायरी को हम किस में मानेंगे, पेरिसेबल नेचर में, किस में मानेंगे? पेरिसेबल में है। हाँ, पेरिसेबल में मान लेंगे इसको, है ना. Deteriorate. पेरिशेबल नहीं सर, आई थिंक वैल्यू ऑफ द एसेट इज लाइकली टू डिटेरियोरेट हाँ, वहां भी सिग्निफिकेंटली। मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. तो इट कुड बी कवर्ड आइदर वे. यस. Now, by what percentage can it be reduced further? So it can be reduced further. ये सर आई कहाँ थिंक पर लिखा है, ये शेड्यूल हमारा मोड ऑफ जो है ना, ये लिखा है प्राइवेट यू सेल कैन देयर रिड्यूस इज इट नॉट। अप टू 75%. ठीक है. सर प्राइवेट सेल आई थिंक देयर इज नो सच क्लॉज। यस. इन केस ऑफ प्राइवेट सेल देयर इज नो सच क्लॉज. In public बट auction only द फर्स्ट 25. फर्स्ट प्रायोरिटी इज पब्लिक ऑक्शन ओनली, Right. because regulation 27 also says the bankruptcy trustee shall ordinarily sell the assets of the bankrupt through an auction. So ordinary mode of sale is auction. ठीक है. So private sale is an exception. और प्राइवेट सेल के बारे में क्या लिखा है इसमें? प्राइवेट सेल का लिखता भी है कि वेयर एन एसेट इज टू बी सोल्ड थ्रू प्राइवेट सेल. सर ही शुड गिव ए सेल्स स्ट्रेटजी in progress report, and he can liaise directly through the potential buyers or agents. राइट. That's it. एंड देयर इज नो रोल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर. Yeah. So whose permission is required for reduction below 75%?
Now suppose originally it was to be sold at 600 lakhs. That was the reserve price fixed. It was reduced up to 75%. That means 450 lakhs. Now if you want to reduce it further, whether you need the permission of A or CC here. CC. CC. Ah. CC, sir. But in case of liquidation, whether you need the permission of A or CC. In liquidation, can you open the related provision of liquidation also side by side? लिक्विडेशन वाला भी देख सकते हैं क्या साइड बाय साइड? लिक्विडेशन प्रोसेस में भी शेड्यूल है एंड वहां पर भी मोड ऑफ सेल की बात करता हूँ. Consultation committee, sir. On the advice कंसल्टेशन of consultation committee, reduce the reserve price up to 25%. यस, अब वो एक ही बात है. बाई भी लिख दिया ना, बाई अप टू 25 और यहां पर लिख दिया अप टू 75, तो एक ही बात है. देयर इट इज गिवन इन शेड्यूल 1 मोड ऑफ सेल. यस, but in case of liquidation there is a provision of issue of a public notice. Whether in mode of sale during bankruptcy there is any provision for issue of public notice? Public notice का कोई clause है क्या in case of bankruptcy? In case of liquidation, if we see schedule 1 point number 5, point number 5 says the liquidator shall issue a public notice of an auction in the manner specified in regulation 12(3). So in bankruptcy also, is there any such provision, Pradeep ji? But through auction means generally it will be Right. uh, Yes. Through auction means naturally you have to publicize that thing. And point number 3 also says so. The marketing strategy may include releasing advertisements for auction of the asset. So if you see schedule 2 mode of sale part A auction, so it says in point number 3, the marketing strategy may include releasing advertisement for auction of the asset. yes, Preparing yes, sir. information sheets for the asset, preparing a notice of sale and liaising with the agents. Preparing notice of sale. Now, next question. Let us see in this. So in the both the cases, reduction of price, it's only consultation committee or creditors. Sorry, committee of creditors. It is required, sir. Right. In liquidation, it is regulation number 4 proviso. Provided that in case where the reserve price of the failed auction of the asset was fixed as per the valuation, the liquidator may, on the advice of the consultation committee, reduce the reserve price up to 25% once during the process. Cannot go below above 25. Sir. It says reduce the reserve price up to 25% once during the process.
whether there is any requirement of earnest money in liquidation or this bankruptcy process. Any requirement of earnest money. Yes, sir. In, Yes, sir. Yes, sir. in case of liquidation, it is given in point number 3. It says earnest money deposit shall not exceed 10% of the reserve price. It says the liquidator shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit, as well as pre-bid qualifications, provided that the liquidator shall not require payment of any non-refundable deposit or fee for participation in an auction under the liquidation process. Provided further that the earnest money deposit shall not exceed 10% of the reserve price. Now, in case of bankruptcy also, is there any similar requirement? Earnest deposit is required, But but it no is such amount has been given. mentioned, sir. It is as per the terms of sale. Okay. Point number 4. Point number 4 says the bankruptcy trustee shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit, pre-bid qualifications, and time period for full payment. Okay. But in case of liquidation, there is a capping also. It says it shall not exceed 10% of the reserve price. So if we read these two provisions side by side, we will be able to develop a better understanding and we will be able to remember also. Next point. X and company dealing in real estate is interested in taking over real estate division of ABC. Mr. X, one of the partners, is a relative of associate of the bankrupt. Can X and company buy this property? Question you have understood? X and company is a interested buyer. He is dealing in real estate. And X and company, maybe a partnership firm or proprietorship firm, they are interested in taking over real estate division of ABC. Mr. X, one of the partners, is a relative of associate of the bankrupt. So now whether he is allowed? Actually, No, it sir. says both direct and indirect sale is covered. Yeah, it's Associate of the adjudicating bankrupt is authority. covered. But he is not an associate, he is a relative of associate of the bankrupt. So even a relative may be barred because it may be deemed as indirect. Right, indirect. है ना भाई रिलेटिव को पहले दे दो रिलेटिव से फिर वहां पर कर लो इस तरह से उसको सो हियर द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड The BT wants to disclaim the fisheries division since there are no takers despite press advertisement. One of the fishermen is interested in buying it at 10,000 rupees. So any formality is required for this? Suppose you want to disclaim a property, then what is the formality required? It's onerous property. Yes. So it is given in Regulation 29. Regulation 29 talks of disclaimer of onerous property. Now let us see the provisions regarding disclaimer of onerous property. So what are the provisions for that? Regulation 29. Disclaimer of onerous property. So what it says? The bankruptcy trustee shall notify the bankrupt and the persons interested in the onerous property in respect of the proposed disclaimer at least 7 days prior to serving the notice of disclaimer under subsection 1 of section 160.
The notification under sub-regulation 1 shall contain the intention of the bankruptcy trustee to disclaim the property, particulars of the property intended to be disclaimed, and details of the interested persons in such property. ठीक है? The notice under subsection 1 of section 160 shall be filed with the adjudicating authority within 3 days of giving such notice to the persons mentioned therein. An application under subsection 1 of section 163 shall be made within 30 days of the applicant becoming aware of the disclaimer or from the date of the notice of disclaimer under subsection 1 of section 160, whichever is earlier. And for the purpose of this regulation, a person interested in owner's property means any person who claims an interest, any person who is under any liability, where the disclaimed property is a dwelling house, any person who is in occupation of or entitled to occupy the dwelling house on the date of filing of the application. Now, whether you need to inform the committee of creditors also. This is the question. The answer you will find in the provisions regarding bankruptcy. सेक्शन में मिल जाएगा आपको. 153. I think you can look at section 153. One 160. One 160 subsection 4. Section 160 subsection 4, if we read, it says a notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. तो आपको क्या है, इसको भी नोटिस देना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को. सेक्शन 160 सबसेक्शन 4. एक बार इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस सेक्शन में, है प्रदीप जी. सेक्शन 160 160. सबसेक्शन 4, बिकॉज इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं. सेक्शन 160 सबसेक्शन 4 टेक्स अस टू सेक्शन 155. Let us read first section 160 subsection 4. It says notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. 155 में कौन सी प्रॉपर्टी की बात करता है? So, All types of property. Estate of the bankrupt.
155 talks of a state of the bankrupt. चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. So he has to inform the committee of creditors and the bankrupt. He has to inform the adjudicating authority also. Adjudicating authority को भी करना पड़ेगा ना इसमें. हाँ जी प्रदीप जी, whether ये है नया सर आई थिंक क्या. सर सर आफ्टर सेल वो बताना पड़ता है ये एनसीएलटी को. अजय सर, अगर आप रीड करते हैं तो सर थोड़ा उसको एलोबरेट करेंगे, तो जो उसमें कंफ्यूजन है ना, एक बार सेक्शन. हम्म. Disclaimer of owner's property actually. So it has to be with the permission of the COC also. And you have to inform the adjudicating authority. Adjudicating authority से तो permission लेना ही है for disclaimer. सर उसमें दो कंफ्यूजन, एक जगह 30 डेज की बात करता है, एक जगह 3 डेज की बात करता है. कहाँ पर? उसी में 3 डेज में हमें इंटीमेट करना है, एक जगह 30 डेज में करना है. दो 160. हाँ सेक्शन 160 ठीक है. कहाँ 30 days कहाँ है? 160 में ही सर दो जगह बोल रहा है. 160 सब सेक्शन 1 में. अजय सर आपके पास है वो एक्ट? जी सर. वो एक बार वो देखे ना सर. 160 सब सेक्शन 1, 160 सब सेक्शन 5. So it says the bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in owner's property, disclaim any owner's property which forms as a part of the estate of the bankrupt. ओके, उसमें टाइम की बात नहीं कर रहा है ना, नहीं कोई टाइम नहीं नहीं. सर. लेकिन उसी सेक्शन में नोटिस तो हमने आपको कहीं देखा था 161 में मिलेगा ना. 161 में ओके. नोटिस मिल जाएगा आपको. 160 वहां दो अजय सर देखे ना, एक जगह 3 डेज की बात कर रहा है, एक जगह 30 डेज की बात कर रहा है. 3 डेज में हमें शायद ए को इन्फॉर्म करना है, 3 डेज में एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है. 3 days का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 160 में. सर मैंने देखा था सर, आपका स्क्रीन ओपन था ना उस समय, मैंने देखा. सर वो रेगुलेशन में सर रेगुलेशन ओके 29 ओके सॉरी, हाँ रेगुलेशन. रेगुलेशन 29 ओके में notice under subsection 1 of section 160 shall be filed with adjudicating authority within 3 days of giving such notice to the persons mentioned therein. ओके. So before 7 days we have to give a notice, sir. ओके. Shall contain. Regulation 29. ओके. The bankruptcy trustee shall notify the bankrupt and the persons interested in the owner's property in respect of the proposed disclaimer at least 7 days prior to serving the notice of disclaimer under subsection 1 of section 160. So after 3 days of giving such notice, we have to inform the adjudicating authority. Right. Within 30 days. 3 days, I think, sir. कहाँ पर? नहीं, Sub-regulation 3. Regulation 29, sub regulation 4. An application under subsection 1 of section 163 shall be made within 30 days of the applicant becoming aware of the disclaimer. अच्छा 3 पढ़ रहे हो, ठीक है. Notice shall be 3 filed it is within 3 days, right? And any person who objects, so then he can make an objection within 30 days.
Yes. 30 डेज में ऑब्जेक्शन कर सकता है वो। 3 डेज में आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नोटिस फाइल करना है, और 7 डेज का आपको नोटिस देना है। ये है, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन रेगुलेशन 29। तो रेगुलेशन 29 में देयर आर 3 डेट्स। वन इज 7 डेज, Prior to disclose. right? So you have to notify the bankrupt and the persons interested in the owner's property at least 7 days prior to serving the notice of disclaimer. ठीक है? Notice has to be filed within 3 days of giving such notice, and then an application. Suppose somebody objects, so then he can raise the objection within 30 days of the applicant becoming aware of the disclaimer or from the notice of disclaimer. ये है। अच्छा, some of the flats of real estate division have been illegally occupied by migrant laborers. It's a practical situation. Sometimes the persons, they occupy the flats illegally because suppose their salaries are not paid, है ना, वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं। Laborers refuse to hand over the flats till their wages were paid. Now what should the bankruptcy trustee do? What he can do? Sir, he should give a notice Okay. because they are interested, I think. Hmm? Sir, they will become person interested in the owner's property. नहीं, this is not the owner's property ना, ये तो फ्लैट्स हैं रियल एस्टेट डिवीजन के। Ah, okay. So definitely he can give them notice of eviction, otherwise he can approach the adjudicating authority for giving them the directions. If they won't pay hit to the notice, and lastly, at the last, the RP, so the liquidator have to go to the NCLT only to get the order. Right. And Now bankruptcy trustee feels that there is no need to appoint the valuer, but the committee is in favor of valuation. Is it mandatory to get the valuation done in such a situation? Suppose the bankruptcy trustee feels that valuation is not required, but the committee of creditors says valuation should be done. Then yes, sir, whether it is mandatory? the RP liquidator have to pay the hit to the SCC. जो भी बोलता है करना पड़ेगा। हाँ, नहीं बैंक्रप्सी में। In case CC does not pass the resolution, नहीं, फिर तो होगा ही नहीं ना। okay. Sir, it is mandatory, sir, to appoint. Regulation 30. नहीं सर, अगर इंसॉल्वेंसी में वैल्यूएशन हुआ है जस्ट लाइक Regulation सीआरपी में 30 says the bankruptcy trustee shall appoint a registered valuer to value the assets which may or may not form part of the bankruptcy estate when he is of the opinion yes that it is necessary or when a resolution to that effect has been passed by the committee. So there are two situations. First is when he is of the opinion that it is necessary, and second, when a resolution to that effect has been passed by the committee. सेम इज लाइक सीआरपी में वैल्यूएशन हो गया तो लिक्विडेशन में कराना कि नहीं कराना, Right. सिचुएशन इज बिल्कुल बिल्कुल हाँ। So whether fair value or liquidation value or both, what is to be given? यहाँ पे सर लिक्विडेशन लाइक Realizable value आएगा। The registered वैल्यू। valuer appointed under sub-regulation 1 shall submit to the bankruptcy trustee the estimates of the realizable value of the asset. Regulation 30, sub-regulation 2. Whether any additional valuer can be appointed? Yes. The bankruptcy trustee may appoint an additional registered valuer for valuing the assets of the bankrupt if required in the circumstances of the case, who shall independently submit his estimate as per sub-regulation 2. So normally one valuer in case of bankruptcy, but second can also be appointed in case circumstances warrant so. In the event an additional registered value is appointed under sub-regulation 3, the average of the estimates received from both valuers will be considered to be the value of the assets. Okay. Whether formulation of sales strategy is optional or mandatory. ये जो सेल्स स्ट्रेटेजी बनानी है ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? इट्स एन ऑप्शनल Mandatory, sir. It has to be
along with the quarterly progress It reports. says the bankruptcy trustee shall prepare a sales strategy. शैल बोलता है इसमें, तो मैंडेटरी है हिसाब से। तो प्राइवेट सेल में भी लिखा द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल प्रिपेयर ए सेल्स स्ट्रेटजी, तो सेल्स स्ट्रेटजी तो बनानी है। नाउ इज सच सेल्स स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ए, ये आपको ए को भी देनी है क्या? द आंसर इज Yes, sir, along with the progress Yes. report. right, along with the quarterly progress report you have to give it. Whether any timeline is there, so timeline is, it is given in regulation 10, 15 days from the end of the quarter. Now BT feels that physical auction of the flats may have fetch higher value. Any permission required for this? Yes, sir, from adjudicating authority. Eight, sir, schedule 2 में 8th point. Schedule. Right. The bankruptcy trustee may sell assets through a physical auction with the prior permission of the adjudicating authority if he is of the opinion that will maximize the realization from the sale of the assets and is in the best interest of the creditors. So please note that physical auction is separate and private sale is separate. प्राइवेट सेल अलग चीज है, फिजिकल ऑक्शन अलग चीज है। नॉर्मली इट विल बी ई ऑक्शन, जो ऑक्शन वर्ड यूज किया गया है इन पार्ट ए दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली, वो ई बिक्रे आता है ना, मैं वेबसाइट का भी एड्रेस दिया है आपको, अपने Yes, ग्रुप में bank. डाला है, तो दैट इज द प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बट ये So फिजिकल bank. ऑक्शन भी इसमें हो सकती है। नाउ बीटी वांट्स टू अपॉइंट द फादर इन लॉ ऑफ हिज मैटरनल अंकल एज ऑक्शनियर, कैन ही डू सो? रेगुलेशन 5, इफ वी सी रेगुलेशन 5 क्या बोलता है? रेगुलेशन 5 टॉक्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। Professionals, yes, sir. हाँ, Shall not be it says appointed. he should not be a Is relative of the related party. bankruptcy trustee. तो और रिलेटिव कहां से देखोगे आप? रिलेटिव यू विल सी एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 कैपिटल है, ठीक है ना, तो वहां से आपको देख रहा है। तो क्या आप फादर इन लॉ ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज ए रिलेटिव, ठीक है, मदर्स ब्रदर हो गया ना मैटरनल अंकल, बट उसका फादर इन लॉ वो इज नॉट कवर्ड। If he is otherwise qualified, he can be. For preparation of marketing strategy, bankruptcy trustee has hired a consultant who is to be paid consultancy charges of 1 lakh. Whether any TDS is required to be deducted, yes. ठीक है, so you have to deduct tax also. Yes. Now, let us side by side see the provisions in liquidation. Liquidation वाले provisions भी एक बार देख लेते हैं on this mode of sale. Almost same है ना? हमने शायद किया था कि वो लिक्विडेशन वाला मोड ऑफ सेल नहीं किया था। जब हमने लिक्विडेशन डिस्कस किया था तो क्या मोड ऑफ सेल डिस्कस किया था उस टाइम? Yes, sir. किया था। Yes, sir. तो बस ठीक है, फिर तो दोबारा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है उसको, फिर क्यों डिस्कस करना। तो नाउ लेट अस गो टू पार्ट 4। पार्ट 4 पर चलते हैं, बोर्ड वाला है ना। फाइव 29 थोड़ा सा बोर्ड वाला कर लेते हैं, जरा अच्छा रहेगा। So section 188, sir. हाँ, स्लाइड नंबर क्या था? 529 था क्या था? ऐसे कुछ था ना। यस, हाँ, 188 से करना है ना। सेक्शन 188, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, है ना। Right. हाँ, Yes, sir. सो सेक्शन 188, ये क्या हुआ? ये कौन सा चला गया? अच्छा, ये स्लाइड स्टॉप में दूसरा
चल रहा होता है ना एक्चुअली। हम्म। Section 188, establishment and incorporation of board. इनकॉर्पोरेशन। So what it says? So it says, actually the central government by way of notification has established this board. Okay. So section 188 says, with effect from such date as the central government may by notification appoint, there shall be established for the purpose of this code a board by the name of the Insolvency and Bankruptcy Board of India. The board shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual seal, perpetual succession, and a common seal, with power subject to the provisions of this code to acquire, hold, and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue or be sued. The head office of the board shall be at such place in the national capital region as the central government may by notification specify, and national capital region shall have the meaning which is given in National Capital Region Planning Board Act. And the board may establish offices at other places in India. So 188. ठीक है. Section 189. Constitution of the board. The board shall consist of the following members who shall be appointed by the central government. A chairperson, 3 members from amongst the officers of the central government, not below the rank of joint secretary or equivalent, 1 each to represent the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Law. ठीक है. तो तीनों से एक एक एक्स ऑफिशियो मेंबर आ जाएगा. क्या है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट. फिर एक मेंबर आएगा टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिजर्व बैंक of India, ex officio. 5 other members to be nominated by the central government, of whom at least 3 shall be whole time members. ठीक है. तो बोर्ड में कौन कौन से लोग हो गए? एक तो चेयरपर्सन हो गया, देन 3 persons हो गए ex officio, not below the rank of joint secretary or equivalent, 1 each to represent Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Law. फिर 1 member to be nominated by RBI. RBI. Then 5 other members to be nominated by the central government, of whom at least 3 shall be whole-time members. ठीक है. The chairperson and other members shall be persons of ability, integrity, and standing who have shown capacity in dealing with problems relating to bankruptcy and insolvency and have special knowledge and experience in the field of law, finance, economics, accountancy, or administration. The appointment of the chairperson and the members of the board, other than the appointment of an ex officio member under this section, shall be made after obtaining the recommendation of a selection committee consisting of, देखिए इसमें क्या है, जो चेयरपर्सन है और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा जितने भी लोग हैं उनका सिलेक्शन कौन करेगा? ये सिलेक्शन कमेटी करेगी. ठीक है. The appointment of the chairperson and the members of the board, other than the appointment of an ex officio member, shall be made after obtaining the recommendations of a selection committee. और selection committee में कौन कौन होगा? Cabinet secretary will be the chairperson, then secretary to the government of India to be nominated by the central government, वो member होगा इस selection committee का, then chairperson of the IBBI in case of selection of members of the board. ठीक है. भाई चेयरपर्सन अपने सिलेक्शन में तो नहीं बैठेगा ना, है ना. तो chairperson of IBBI will be member of this committee, and 3 experts of repute from the fields of finance, law, management, insolvency and related subjects to be nominated by the central government as members. तो इनकी एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो किसको अपॉइंट करेगी? चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द बोर्ड को. The term of office of the chairperson and members other than ex officio members shall be
5 years or till that age of 65 years, whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment. Salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the chairperson and members other than the ex officio members shall be such as may be prescribed. तो आपको इसके लिए क्या करना है, सैलरी के रेगुलेशंस पर जाना है. सैलरी रेगुलेशंस है 1 to 20. सो लेट अस रीड दीज रेगुलेशंस आल्सो साइड बाय साइड. ये रेगुलेशंस है. ये रेगुलेशंस क्या है, ये आपके रेगुलेशंस हैं, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स. रूल्स, ये रूल्स है. ठीक है. तो ये रूल्स में क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स. The chairperson and the whole time member shall be a person who shall not have any financial or other interest as are likely to affect prejudicially his functions as such chairperson or member. एक बार प्रदीप जी पढ़िए जरा रेगुलेशन नंबर 3 से, रूल नंबर 3 से. Yeah, the terms and conditions of service of chairperson and members. The chairperson and the whole-time member shall be a person who shall not have any financial or other interest as are likely to affect prejudicially his functions as such chairperson or member. The chairperson and whole-time member appointed to fill up a casual vacancy shall hold office for the remainder period of the term of the chairperson or, as the case may be, whole-time member in whose place he is appointed. The chairperson and whole-time member shall not accept any employment before the expiry of a period of 1 year from the date of demitting the office, डिटरमिनिंग होगा. नहीं, डिमिटिंग, गलत हो डिमिटिंग गया. मतलब छोड़ने का. ओके. ओके. डिमिशन आगे. except with the previous sanction of central government. Pay. The chairperson shall have an option to receive pay as admissible to secretary to the government of India or a consolidated salary of 5,62,500 per month. एक्चुअली Every whole-time member. ये जो ये जो सैलरी वाला है ना, ये इट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही लेटेस्ट है. लेटेस्ट जो है ओके. ना ये है. बट ये डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस ऑल्सो इट चेंजेस. बट जहां तक मेरे को ध्यान पड़ता है कि दिस इज द लेटेस्ट प्रोविजन. यस प्लीज. तो Every 560 whole-time member. 500 पर मंथ और उसका है 5 लाख पर मंथ. यस प्लीज. Every whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to an additional secretary to the government of India or a consolidated salary of 5 lakhs per month. In case of an appointment of a person as the chairperson or whole-time member shall have an option to receive pay as admissible to the secretary or additional secretary to the government of India respectively, who has retired from the service under the central government or state government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the contributory provident fund or other funds or retirement benefits. The pay and allowance of such chairperson or member, as the case may be, shall be reduced by the gross amount of the pension equivalent of gratuity, or employer's contribution to the contributory provident fund, or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him. I think that whatever the pension amount, it has to be reduced from this 5,62,500 or 500 or 5 lakhs. Right. Suppose he is already receiving a pension of 1 lakh, so then it will be reduced to that extent. This is the meaning. Yes. Dearness allowance. The chairperson and a whole-time member who has opted pay as admissible to a secretary or additional secretary to the government of India respectively shall receive. मुझे लग रहा है कि ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 में यहाँ 6,000 दे रखा है इसने. इसको 6 ही कर देता हूँ. यस प्लीज. हाँ जी. 6,000 पर एनम ही है बुक में. हाँ 6,000 ही है. ठीक है, वही बुक से ही मैं देख रहा हूँ. ठीक है. Shall receive dearness allowance at rates admissible to a Group PA officer of the central government of equivalent rank. Entertainment allowance. The chairperson and whole-time member shall be entitled to entertainment allowance subject to a maximum of 6,000 per annum.
Leave. The chairperson and whole-time member shall be entitled to a leave as follows. Earned leave at the rate of 30 days for every completed calendar year of service, provided that the leave account shall be created with earned leave in advance in two installments of 15 days each from the first day of January, first day of July of every calendar year, provided further that the earned leave at the credit at the close of previous half shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that leave so carried forward plus credited for half year do not exceed 300 days. Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of 20 days in respect of each completed year of service to be created in advance in two installments of 10 days each on first day of January and बस first इतना day ही of काफी July है of मेरे ख्याल है ना। ज्यादा हाँ इससे बस ये है कि थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, बस ये अपने को, ये है। और कोई खास बात है नहीं, है ना। कि इसका वेटेज कितना मार्क है है, इसका? इसका वेटेज मार्क्स का कितना है एग्जाम में? नहीं वेटेज का ऐसा है ना, वेटेज कुछ नहीं है। देखो भाई, पता क्या है, वो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चेयरपर्सन का सैलरी कितना होगा, तो चेयरपर्सन का सैलरी आपको पता होना चाहिए बस ये। क्योंकि ये सर क्या है, दैट इज टाइम 5 टू lakhs टाइम चेंज भी हो रहा है। तो चेयरपर्सन का या जो मेंबर है, होल टाइम मेंबर, उसका सैलरी इतना, ये तो जरूर पता होना चाहिए कम से कम। सर बट दैट सर इज इसमें एक्स ऑफिशियो के बारे में कुछ नहीं बोला। एक्स मेंबर जो ऑफिशियो को एक्स तो ऑफिस। सैलरी वहां अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से मिल रही है ना। एक्स ऑफिशियो कहाँ से आया, ओके आरबीआई से आया, ओके मिनिस्टर ऑफ लॉ, वहां से आया, उसको तो ओके सिर्फ अलाउंस वगैरह मिलते हैं बस, और क्या। ओके। हाँ, सिटिंग फी आई थिंक हाँ, उनको तो यहाँ से कुछ नहीं मिलना ना। ये तो जो फुल जी टाइम है उन्हीं को मिलना है ना। ओके उनको तो वहां से सैलरी मिल रही है बस, और क्या। जी। सर दैट 5 lakhs 62 इट्स बेसिक और हाउ इट इज सर इट्स ग्रॉस कंसोलिडेटेड है ना, लिख दिया ना, कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग ऑल। हाँ, इंक्लूडिंग ऑल है। ओके अब चलिए इस पर चलते हैं हम लोग। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी है ना इसमें। तो जी बोर्ड मीटिंग के बारे में देख लेते हैं। ये आपको कहाँ दिया है, प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस, कि हाउ बोर्ड मीटिंग्स विल बी कंडक्टेड। तो गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स में आपसे क्या पूछ सकता है, कि बोर्ड मीटिंग्स में पूछ सकता है कि हु विल बी द चेयरपर्सन, कन्वीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। ये कन्वीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स पढ़ लेते हैं एक बार जरा। ये प्रदीप जी पढ़ लीजिए पहला, कि हाउ मेनी मीटिंग्स, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, ठीक है। right. There shall be at least four meeting of the governing board in a year and at least one meeting in each quarter. हम्म, The chairperson or in the absence any other member nominated by the chairperson in this behalf may convene the meeting of the governing board. हम्म, Any three members may require the chairperson to convene a meeting of the governing board at any time, and the chairperson shall convene the meeting of the governing board accordingly, हम्म, provided that if the chairperson is not available, there any three members may require the secretary to convene the meeting of the governing board. हम्म। अब ठीक ये है। है कि सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी होता कौन है, ये देखिए, वो आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेटरी टू द गवर्निंग बोर्ड, डेजिग्नेटेड अंडर रेगुलेशन 9(1) ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो 9(1) पढ़ लेते हैं एक बारी। 9(1) सेक्रेटरी। 9(1) क्या बोल रहा है, 9(1) ये बोलता है, थोड़ा सा जी ये द चेयरपर्सन शैल डोमिनेट ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड एज सेक्रेटरी टू द गवर्निंग बोर्ड टू कीप कस्टडी ऑफ कॉमन सील, रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग्स। एजेंडा, minute book and other documents. Secretary shall arrange meetings, record minutes, and generally ensure that these regulations are followed. ठीक है जी, तो यहां पर थे हम लोग, कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स। एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं उसको। यस प्लीज। तो थर्ड नंबर पढ़ लिया था हमने ना। जी। कन्वीनिंग मीटिंग थर्ड से पढ़े सर। थर्ड तो पढ़ लिया ना हमने। ओके कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में प्रोवाइडेड थर्ड दैट। पॉइंट पढ़ लिया था हमने, फोर्थ पॉइंट पढ़ना है।
Okay. The meeting of the governing board shall be held at such time and places in India as may be specified in the notice of convening the meeting. The meeting of the governing board shall ordinarily be held at its head office, provided that governing board may also hold meeting at its other offices or at any other place in India whenever, in the opinion of the governing board, it is expedient to do so. मीन्स हेड ऑफिस भी कर सकते हैं, अदर ऑफिस में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ और गवर्निंग बोर्ड फील करता है कि ऐसा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। सिर्फ स्क्रीन आगे करना पड़ेगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कुछ इसके भी नहीं दिख बाद रहा। नोटिस, इसके बाद अभी सर नहीं, नोटिस है सर, इसके छठा बाद नोटिस पॉइंट केवल दिख रहा है सर, लास्ट। द सर, उसके चेयरमैन बाद नोटिस है सर और इफ ही इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड फॉर एनी रीजन, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting. Shall preside over the meeting. अब नोटिस, नोटिस कितने दिन का चाहिए मीटिंग के लिए? 10 days लिखा है। Not less than 10 days. हाँ, Not less than 10 days notice shall ordinarily be given for each meeting of the governing board, and such notice along with the agenda shall be sent to every member at his usual address in India or by email as furnished by him to the board, provided that if an urgent meeting of the governing board is required to be convened, 10 days notice may be dispensed with by the chairperson. कोरम No देख लीजिए, business other कोरम than इंपॉर्टेंट है, कोरम। okay. नेक्स्ट पॉइंट। Okay. 5 members if the governing board has 8 or more members, and 3 members if the governing board has less than 8 members. हाँ ठीक है। Shall उसके constitute the बाद में quorum. मिनट्स, Oh, सेक्रेटरी हो ही गया हमारा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। the board shall. एक मिनट, ये 10th पॉइंट देख लीजिए, 10th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Okay. मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स। Meeting. Okay. Every member who is directly or indirectly concerned or interested in any business coming up for consideration at a meeting of the governing board shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest as such meeting, and such disclosure shall be recorded in the proceeding of the governing board, and the members shall not take part in any deliberation or decision of the governing board with respect to that business. Explanation: the expression directly or indirectly referred to in this regulation shall include any concern or interest of member either by himself or through his relative within the meaning of definition section 2 subsection 77 of the Companies Act 2013, or by reason of being a partner or director of that concern. चलिए, रिलैक्सेशन, ये ओथ चला जाएगा बस, और इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन सील, एफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील, ये कॉमन सील किस किस सिचुएशन में लगाना है? Common seal of the board shall not be affixed to any instrument except in pursuance of a resolution of the governing board and in presence of at least one member, who shall sign on such instrument in token of his presence, and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as the executor. मैं हर चीज पे कॉमन सील नहीं लगानी है, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा गवर्निंग बोर्ड का, तभी लगेगी। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, ये देख लीजिए। Whole time. Okay. हाँ, Whole time members shall not accept any gift, whatever name called, to the extent possible from a regulated entity. A whole time member shall hand over the gift if he receive any and the value exceed 5,000 to the IBBI. यही थे सर, कि और कुछ कहीं गड़बड़ हुआ कुछ? बस इतना ही काफी है, ओके, है ना? तो ये भी हो गया। चलिए, हमारा ये सेक्शन 188 और 189 कंप्लीट हो गए, है ना?
ओके। अब हम ओ चलते हैं। सर, एक दिन पहले हम लोगों को बता देंगे कितना सेक्शन, तो सेक्शन थोड़ा हम लोग पढ़े रहे तो इजी होगा हम लोगों को थोड़ा उस पार्टिसिपेट करने में। हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन सा सेक्शन? हाँ, वो पहले आप उसमें दे देंगे सर, तो हम लोग थोड़ा हाँ टाइम निकाल के एक बार उसको। नहीं बिल्कुल दे देंगे। आ, नहीं अब देखिए, अब पार्ट 4 ही करना है अब हमने। हाँ जी सर, लेकिन क्या होता है आप इतना मेहनत करते हैं सर, हम लोग को फील होता है हम लोग जब तैयारी नहीं करते हैं तो। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखिए आपको ओके। पार्ट 4 पे ही करना है। अब कल हम ओके। करेंगे उसका, ये जो आईपीए वगैरह है ना। ओके। अब 188 189 तो हो गया हमारा, अब 190 पढ़ जी। लीजिए। ओके। सेक्शन 190 के मेंबर जो है कैसे रिमूव होगा फ्रॉम ऑफिस से, ये देखिए। रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑफिस। हाँ सर एक विजिबल नहीं, मिनट थोड़ा नीचे एकदम बिल्कुल। मैं करता हूँ अभी इसको। हाँ जी, अब पढ़ा जा रहा होगा। राइट। हाँ दिस थोड़ा ऊपर ले लेंगे सर तो बेटर रहेगा। ऐसे। हाँ आप जी मोबाइल से सर। पढ़ते द हैं क्या, सेंट्रल कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम स्क्रीन से ही पढ़ रहे हैं सर। अच्छा ठीक है हाँ। Oh, the central government may remove a member from the office if he is an undischarged bankrupt as defined under Part 3rd, has become physically or mentally incapable of acting as a member, has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involve moral turpitude, has so abused his position as to render his continuation in the office detrimental to the public interest, provided that no member shall remove under clause D unless he has been given a reasonable opportunity of being heard या हाँ being met. Okay. तो उसमें यह है कि डी डी में आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, बाकियों में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। भाई अनडिस्चार्ज Okay. बैंकक्रप्ट है तो हो जाएगा, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो गया तो हो जाएगा, या कन्विक्शन हो गया तो Right. हो जाएगा। रिमूवल Okay. ऑफ मेंबर। चलिए 191, Okay. सेक्शन 191। One power of chairperson. Save as otherwise determined by regulation, the chairperson shall have power of general superintendence and direction of the affairs of the board, and may also exercise such other powers as power may be delegated to him by the board. of हम्म meeting of the board. ठीक है ना। हाँ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। अब मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड के ना गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस है, इसके लिए भी Okay. अलग से रेगुलेशंस है। Okay. यस एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर हम रेगुलेशंस पर चलेंगे इसके। थोड़ा 190। सा सर स्क्रीन छोटा कर देंगे, बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, आधा राइट साइड में दिख नहीं रहा। अब ठीक है। The board, जी सर, जी जी। हाँ Board, जी, board shall meet at such time and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business as its meeting, including quorum at such meeting as may be determined by the regulation. The chairperson, or if for any reason the chairperson is unable to attend any meeting of the board, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting. All the questions which come up before any meeting of the board shall be decided by majority votes of the members present and voting, and in the event of any equality of votes, the chairpersons or his absence or in his absence, the person presiding shall have a second or casting votes. हाँ अब इसके बाद ना हम ये मेजॉरिटी होना गवर्निंग चाहिए, बोर्ड और नहीं मीटिंग तो वाले ना चेयरपर्सन या। एक जी बार सर। ही रेगुलेशंस भी इसके देख लेते हैं। ओके। ये जो गवर्निंग बोर्ड मीटिंग वाले रेगुलेशंस है ना, इन जी। रेगुलेशंस को भी देख लें। ये हमारे ठीक है, रेगुलेशंस है, ठीक। प्रोसीजर फॉर गवर्निंग ओके। बोर्ड मीटिंग्स। ओके। ठीक है जी। ये। तो ये गवर्निंग जी। बोर्ड का क्या क्या बिजनेस है, ये आ जाएगा। ओके। ये हमने पढ़ भी लिया, मेरे ख्याल नहीं पढ़ा ये शायद नहीं पढ़ा था, दूसरे वाला पढ़े थे सर। है। हाँ दूसरा ये पढ़ा था। प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स है। ओके। डिफिनीशन इसमें मेंबर्स मींस सेक्रेटरी मींस ये सब दे दिया डिफिनीशन में। कन्वेनिंग द मीटिंग। अरे अभी तो पढ़ा हमने, जी जी जी। ये पढ़ लिया ना, है ना। ये राइट। पढ़ चुके हैं हम लोग। राइट। ठीक है। जी सर। एक मिनट चला जाता है नहीं वहां पर, वहां पर जाता नहीं है।
कोई बात नहीं। 190, हाँ, ये ज्यादा ही आगे आ गए ना हम लोग। right. कोई बात नहीं। हम्म। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये सब हो गए थे हमारे जी, बोर्ड। एक मिनट। 190 हो गया था। है। हाँ, 193 तक हो 19 गए हमारा। अब 194। जी, हाँ जी, जी। vacancies etc. not in invalidation proceeding of the board and officers and employee of the board. हाँ, Employee of the board, no act or proceeding of the board shall be invalid merely by reason of any vacancy in or any defects in constitution of the board or any defects in appointment of a person acting as a member of the board or any irregularity in procedure of the board not affecting the merit of the case. The board may appoint such other officer and employee as it consider necessary for the efficient discharge of its function as manner may be specified तो ये in ना regulation आपके 32. लिए, इसके लिए एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स के रेगुलेशंस हैं। Okay, ये अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स के okay, रेगुलेशंस मिल जाएंगे। okay, और इसके बाद में ये एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस है। अगले वाला अगर हम पढ़े ना, सैलरीज एंड अलाउंसेस जी, पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड शैल बी एज मे बी okay, स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। तो उसके लिए एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस हैं। तो ये तो है हमारे okay, एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स रेगुलेशंस। और एक है okay, एम्प्लॉय सर्विस मैं सारे को इंटरलिंक कर दिया है ना। आपने देखा होगा जी, कि सब पर मैंने इंटरलिंक कर दिया है। वहां से अगर आप जाओगे तो अपने आप ही right, उसको क्लिक करोगे, वहां पहुंच जाओगे आप। right. इजी हो जाएगा पढ़ने में। हाँ, तो ये रिसर्च एसोसिएट्स वाले थोड़े से देख लेते हैं। Okay. एक तो पीरियड क्या रहेगा इनका? पीरियड रहेगा ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर Right. एंड अप टू 3 ईयर्स, provided that the chairperson may extend the term of such engagement 1 year at a time up to a maximum of total 5 years। 3 years, 5 years है। हाँ, टोटल 5 ईयर हो सकता है, नॉर्मली 3 इयर्स तक ओके, रहेगा। लेकिन अगर राइट, चेयरपर्सन चाहे तो कर सकता है ना। तो दो ये साल सारा बढ़ा इसका के। इनकी ये सैलरी वगैरह भी दे रखी है इसमें ओके, कि क्या क्या रहेगी। उसी, उसके बाद में ये एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस हैं, ये हमने पढ़ ही लिया। यहाँ पर थे हम लोग, है ना। 194 हो गया था हमारा। एंड 195, 195 क्या बोलता है? पावर टू डेजिग्नेट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। So until the board is established, the central government may by notification designate any financial sector regulator to exercise the powers and functions of the board। वो तो खैर अब रिडंडेंट हो गया क्योंकि अब तो बोर्ड बन गया। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड क्या है? ये बोर्ड की पावर्स है। ठीक है जी। और इसके साथ में आपको एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस हैं। तो एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस देख लेने हैं। बोर्ड की अलग अलग कमेटीज होती हैं फिर, ओके, है ना। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड अदर कमिटीज। और उसके बाद में फिर एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस आ गए आपके। एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस के बाद में फिर हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और आईपीई, उनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है जी। तो कल क्या रहेगा? कल हमारा रहेगा ये अपना आईपी, आईपी, आईपीई, आईपीए, ये सब।
और देखो दूसरा तरीका इसको पढ़ने का क्या है कि हम एक्सेल चार्ट से पढ़ लें। ये आपको दिखाने का पर्पज यही था कि इतना सिलेबस में है, लेकिन मेरे नहीं, हिसाब तो से हम लोग पिक्चर चार्ट एक्सेल में चार्ट से पढ़ेंगे कल, तो अच्छा रहेगा। हाँ सर। उसमें मेन मेन चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। और डिटेल देखना है तो यहाँ से कुछ भी आप दे सकते भाई, सिलेबस में तो सारा कुछ है, वो तो कहीं से भी एक पूछ। बार एक्सेल चार्ट को थोड़ा समझ लेंगे सर अच्छे से, आपकी मतलब आपके दिमाग से, फिर हमको लग रहा है हाँ अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कल हम एक्सेल चार्ट जो आईबीसी वाला दे रखा है ग्रुप में, ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। प्रदीप जी आप शेयर कर दीजिएगा, है ना? चार्ट है ना? हाँ प्रदीप जी, नहीं सर है सॉरी ना? सर। तो दैट चार्ट वी कैन शेयर इन द ग्रुप, ठीक है।